in public distribution company space. So over to you. What really are the challenges from a distribution company perspective, and what really distribution company is really doing, especially from the context that it was highlighted by our colleagues here and also in the presentation, that the engagement with public distribution company for net metering, etc., still continues to be a pain point and an area of concern. Over to you, ma'am. Good afternoon, everybody, and thanks to 𝗹𝗶𝘀 and BASC for having me here as a panelist. I've been hearing Mr. Mandal's presentation and all the other talks, and something that was it was that Discom is not being a very keen this provider in gearing up this net metering and solar rooftop. See, maybe for last few years it was true, but from as on now, I can very well, and Mr. Yadav is here, I think he'll be there to comment on it, that Discom is very proactively, working, going ahead for RTS policy. And especially I can talk about 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗃, and we have already in line our online software is already there, which has been created with the help of MNRE. So that is a big facilitator. And the recent tender that has been decided of 25 megawatt, we are very well going ahead with it. And it's been just 2 months. And I'm really, sharing it with you that around already in Jaipur Discom, we have already 1,000 applications. And we have already, commissioned around 50-60 projects are already commissioned, and it's moving at a very fast pace. And as of now, Rajasthan as whole has already 889 megawatt of RTS, and 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗃, of course, is in the lead with 412 megawatt. We are already there. And of course, yes, the residential sector is, far behind. Of course, the numbers are more, but the capacity is not up to the mark. And industrial, what the figures I just want to tell you, that though only 8.4% of connections are in the industrial, but it's catering to around 47% of the load. It's around 202 megawatts. So that is actually for Discom, that is not a very good aspect. So because as these consumers go away from us, we are losing a lot on revenue. And so there should be some policy changes, like some policy amendments. So because they are really moving away from us and we are losing a lot of revenue. And of course, yes, I think Discom is a bit hesitant for this RTS program for domestic consumers, which I think in the long run is not going to affect them much on their health. So I personally feel that Discom should go for some demand aggregation and some capex, some different business models. So which right now, I know Discom in Rajasthan has gone for it, though a few studies I personally took interest in. I've got a few studies made, but I think I'll be able to convince some higher authorities to go for some good business models, and so we can move ahead with RTS. So thank you, ma'am. So things are changing. Hopefully we'll see things on the ground. Over to you, Ajay Yadav ji. आप as a Discom player, as a rooftop player और consumers के साथ नजदीकी से जो काम करते हैं, what is their perspective? उनका क्या challenge है? And what are your pain points and what are the key pain points for the consumers from a policy perspective at least? जी, thank you. देखिए, मैं कोई इकोनॉमिक्स या उस तरह से बात नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल. एक्चुअली अगर आप बेस में जाएंगे तो रीजन साइकोलॉजिकल है. मैम ने अभी जो बात कही है, मैं जानता हूं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, रूफटॉप पे बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, हर एक वेंडर का रिप्लाई करती हैं क्या चल रहा है. वो इतने
गर्व से बोल रही हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, तो वो कर रही, मैं जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दो लाइन जब आप सुनेंगे तो उसमें ये आता है कि भाई जो बड़े कंज्यूमर्स जा रहे हैं, या पहले थोड़ा सा डिटरेंट था डिस्कॉम, तो वो रीजन निकल के आ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें आपको 4P मॉडल से समझाता हूँ। इसमें क्या है, पहला P तो है प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जब भी आप डिस्कॉम से या किसी से भी पूछेंगे, अच्छी चीज तो हर कोई अच्छा ही बताएगा। आप डिस्कॉम से पूछिए रूफटॉप सही है, हाँ सही है। ये उसी तरह सही है जैसे कि योगा और जिम जाना सही है। हम सभी को पता है कि योगा करने से हम सही रहेंगे, लेकिन हमने तभी किया जब कोरोना आ गया। पता चला अब तो सांस ले ले, नहीं तो वो जब तक चीज नहीं आएगी तब तक बात सही नहीं होगी। अब मैं दूसरा पी तुरंत लेके आता हूँ, पीपल। मैम के पास बहुत सारे काम है। जब आप उसको एक कॉमन टास्क में डाल देते हैं तो फिर वहां पे फिर वो प्रायोरिटी ही रोकती है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी ये RTS है या और सारे काम है। अगर हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि एक RTS सेल होना चाहिए, जो कि रूफटॉप पॉलिसी में MNRE ने बोल रखा था। वो रूफटॉप सोलर सेल तो बना है, लेकिन अगर मैम ये बोले कि उनका सिर्फ काम रूफटॉप को ही देखना है तो मैं मान जाऊंगा। और उस क्या रेवेन्यू जा रहा है डिस्कॉम से, क्या चीज है, उस सेल को उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। उसका टारगेट रूफटॉप को बढ़ावा देना है। उसका ये टारगेट होना चाहिए कि इतना रूफटॉप है और इसको बढ़ा के इतना देना है आपको, तो उस बेसिस पे प्रमोशन या इंसेंटिव होगा। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा रेवेन्यू जा रहा है या क्या जा रहा है। देखिए, प्रायोरिटी उसकी सेट होनी चाहिए। हम अपने पड़ोसी गुजरात को देखें। गुजरात में 4.5 लाख कनेक्शन है रूफटॉप के, रेजिडेंशियल रूफटॉप, और हमारे यहाँ 25,000 है। 1.5 गीगावाट तो वहां पे सिर्फ रूफटॉप, रेजिडेंशियल रूफटॉप से जनरेट होता है। अब क्या होता है, ये बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर आप उसमें 1.5 मेगावाट और 45 लाख में देखोगे तो आप देखोगे एवरेज 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट बना जाके। 3 किलोवाट को कौन ध्यान देगा? डिस्कॉम जैसी संस्था जो इतनी बड़ी है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न तो वो नंबर्स कोई मैटर करते। राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पे एक प्लांट ही 100 गीगावाट का लग रहा है, वहां पे अगर मैं 1.5 गीगावाट भी ले लूं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो फिर प्रायोरिटी की बात आ गई। अब प्रायोरिटी ये है कि हमें उसको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस उस तरह से देखना है, या हमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने हैं कि भाई इससे, जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि नो डाउट एनवायरनमेंट और ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वहां पे भी प्रायोरिटी आ जाती है। वो लगवाता इंसान तभी है जब उसको ROI बैठेगा। वो एनवायरनमेंट की वजह से नहीं लगवाता है। वो तो अलग बात है कि हाँ ठीक है भाई, ये चीज भी हो जाएगी, ये अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप उसको ये लिख के दे दो, ये करोगे तो साहब इतने आपको पुण्य जुड़ जाएंगे ऊपर जाने के टाइम, वो तब लगवा लेगा। देखिए, हर जगह वो देखता है मेरा रिटर्न क्या आएगा, तो वो फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए जा रहे। आपको पता है ये छोटे रूफटॉप से कितने सारे लोगों को काम मिलता है, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं क्या दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या उनको कितना काम मिलता है। और नो डाउट अच्छी चीज तो है, वो तो हम जानते ही। अब देखिए, हम स्टडी करने के लिए जर्मनी पावर सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम सारी जो जर्मन और यहाँ सब जगह घूम के आ जाते हैं, लेकिन हम जो एक PPT पड़ी हुई है MNRE की साइट पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो हम अपने अप्लाई नहीं करते। हम गुजरात को भी स्टडी नहीं करते। ये तो मैं गुजरात के ही वहां से निकाल रहा हूँ। प्रायोरिटी के बाद पीपल, कि भाई आप देखिए, हमारा पोर्टल तो तैयार हो गया, लेकिन क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हुई? लोग तैयार हैं उसको चलाने के लिए? फिर वहां पे वही आ गई कि काम भले ही कुछ लोगों को ही दिया जाए, लेकिन उनकी प्रायोरिटी सेट हो कि आपको तो सिर्फ रूफटॉप पे ध्यान देना है। अब दूसरा आ गया पॉलिसी, तीसरा P। पॉलिसी क्या होता है? जब भी कोई नियम कानून बनता है, तो देखिए, कोई कानून बहुत पहले बन गया, जब हम उसकी कभी पुराने कानून को उठा के तो हम देखते हैं उसका भाव क्या था। जब वो कानून बनाया गया तो उसका भाव क्या था, भाव को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम आज के हिसाब से पढ़ेंगे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि साहब RERC का ये रेगुलेटरी कमीशन जो भी है स्टेट का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो RE को बढ़ावा दे और
उसके अनुसार वो कुछ अगर चाहे तो रेगुलेशन में बदलाव कर सकता है। लेकिन नहीं, जब आप RERC के ग्रिड जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन वाले रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि साहब 2 मीटर लगाने हैं। अब आप देखो 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, उसमें 2 सोलर मीटर, एक चेक और एक मेन, मतलब 6,000 रुपए तो उसका मीटर का ही हो गया एक्स्ट्रा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं, चेक चला गया, बिलिंग सिर्फ नेट मीटर से होती है, लेकिन वो है, उसके लिए आप बात करिए तो वो CA के रेगुलेशन में ऐसा लिखा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ये लिखा हुआ है कि आपको RE को बढ़ावा देना है और उसके अनुसार आप कुछ चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई उसमें टैरिफ हमारा एक यूनिट भी एक्सपोर्ट हो जाए तो हाईएस्ट स्लैब से होगा, ये तो पॉलिसी की बात है, इसमें डिस्कॉम कुछ नहीं कर सकता। डिस्कॉम तो बोलेगा कि साहब जो रेगुलेशन में लिखा है वो हम करेंगे वैसा, तो वहां पे पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत। बस हो गया थोड़ा। अब सबसे आसान है प्रमोशन। हम अवेयरनेस इतनी बार बोल चुके हैं सारी प्रेजेंटेशन में, जब तक सही से प्रमोट नहीं होगी कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम, देखिए वो सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। एक तो होता है कि प्रमोशन नहीं करो, एक होता है गलत प्रमोशन करना। कई बार क्या होता है कि वो गलत खबर निकल गई कि अब तो सब्सिडी आ रही, तो जो लगवा रहे थे वो भी रुक गए और सब्सिडी आई नहीं, टेंडर आए नहीं, वो सालों साल डिले हो गया। अब वो इंसान इतना दिमाग नहीं लगाता। ये बात भी गलत है कि सब्सिडी के लिए हर कोई नहीं रुकता है। वो जो अनीस जी ने जिनका जिक्र किया, उनको तो कभी सब्सिडी चाहिए ही नहीं थी, वो तो है ही नहीं वो लोग। लेकिन फिर भी मैं राजस्थान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो इंतजार कर लेंगे। 10 किलोवाट का सिस्टम है, अगर आपने 10 महीने इंतजार कर लिया, 1 लाख रुपए बिल दे दिया, 95,000 सब्सिडी मिलेगी। लेकिन नहीं, वो तो मिली ना उसको, वो इंतजार उसका कर लेंगे। और वो ये भी गणित देखिए, आप अगर इस गणित को जाएं सब्सिडी का, जब टैक्स नहीं था सोलर पे 0%, अगर आप उस टैक्स की वैल्यू को 13.8% देखेंगे तो आप पाएंगे वो जितनी आजकल सब्सिडी मिल रही ना उतना ही है। वो घूम फिरा के वही हो गया। लेकिन वो है, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स है अगर उसको सही से प्रमोट किया जाए। और कंज्यूमर को ये बताना पड़ेगा कि आसानी से मिल रहा है या इतने पैसे तक सब्सिडी है। MNRE ने जब पोर्टल लॉन्च किया, नेशनल पोर्टल, तो वो पोर्टल पूरी तरह तैयार नहीं था और पूरे देश में हर अखबार में आ गया, नेशनल पोर्टल लॉन्च हो गया। खर्चा तो हुआ ना उस सब प्रमोशन पे, लेकिन वो किसी को पता नहीं चली वो चीज। तो इसमें क्या है, आप अगर गुजरात की वो पढ़ेंगे ना बेस्ट प्रैक्टिस, तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने उस तरह से किया, छोटे छोटे वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचाए, व्हाट्सएप, SMS, हर तरह से उसको प्रमोट किया। डिस्कॉम के अलग सेल बनाया, डिस्कॉम में हर जगह प्रमोट किया कि सोलर लगवाओ, ये फायदा है। उसमें ही आप एनवायरनमेंट भी लिख दो, वो चले ठीक है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेन तो उसका ये है कि आसानी से हो और उसके पैसे भी बचे। आसानी भी बहुत बड़ी चीज है कि मुझे भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप तो खुद अप्लाई करिए और आपका ये सब होगा, वेंडर आके बात करेगा, ये सब हो जाएगा। ऐसे आप उसको बताएंगे ना तो वो आगे बढ़ेगा। उसके मन में अभी भी डर है कि अगर कहीं मैं सब्सिडी के चक्कर में पड़ गया तो 6 महीने तक तो मेरा इंस्पेक्शन ही नहीं होगा मॉड्यूल का। ये तो क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना, उसके तक हमें बात पहुंचानी पड़ेगी। तो ये सब ठीक हो जाए तो मिल जाएगा बढ़ावा। धन्यवाद अजय जी, आपने काफी important point उठाए। And Tirthankar, I think your presentation also raised many of these points. These has been pain points since many years, since at least last 10 years, 12 years, I have been in the DRE sector. And one of your solution proposed as maybe nothing else emerges, let Discom be the owner, right? Now my question is both to 𝗵𝗍 ji and you, right? 𝗵𝗍 ji, are Discoms ready to become owners of rooftop solar and really promote it, right? And Tirthankar, again, your thoughts on it. Is it really viable? Is it feasible given now in the context? And I know distribution companies quite closely. We actually engage with JENs and technical staff on the ground. They are stressed. They are literally stressed, and they are stressed to keep the grid alive. So in the context, I think it will be unfair, in my opinion, please share yours, to ask them to prioritize distributed RE. Over to you. See, actually, it's not a basic issue of prioritizing things. Discom is also a entity which looks after the social aspects as well, and we are quite responsible for this our role in green energy and energy transition. So it's not that the Discom is always hampering the work of this NAT metering and RTS. We are moving ahead with this, and as far as MNRE is concerned, they are also providing us
good incentives. And I must say that recently we have received an incentive of 23 crores for the year 2021. So, I mean, that is a real good work Discom is promoting, and even MNRE is compensating us for what we are losing. What I feel is, I think a good study is needed, that even because Discoms, they don't have time for all these, working the economics and all that. So I think you should take a study where you can be an eye opener and tell Discom that basically if you go ahead with this much of RTS, you will not lose much. And I think I'm very sure, because I did ask in this, there was a 𝗹𝗶𝘀𝗀𝗃 company, they did a small, a very small study, and it did come out that in long run we will not be at a loss if we look at the cost of infrastructure and everything, what we'll have to do to keep up the demand. So I want that detailed study should be conducted, and of course that will really help Discom, and even to plea our this case to our this regulators and everything. So it's not that the Discom is not going ahead for promoting RTS, or it's like being hampering or something. But yes, of course, because and Gujarat is already there, they are working on some capex model which Rajasthan is not doing. So I think that if a study is there to show cost, we'll be definitely going ahead, and we are already going ahead with this lots of this panel, this distribution of pamphlets, and some jingles were also created, everything. So we will definitely publicize Rooftop, and we are ready to go ahead with it. Thank you, ma'am. 𝗵𝗃𝗃, before you come in, thank you for raising the important point. There's a huge infrastructure cost, especially in terms of transmission, even though large scale utility solar seems to cheaper, the associated cost can be very big. I think is currently there. So we need to actually address that part. Thank you, 𝗵𝗃𝗃. I think the incentive under the net metering scheme is an important issue, right? MOP came up with some rules limiting it to 10 kilowatt. There was a political backlash sort of from stakeholders, of course. Same happened in Rajasthan also, and the limit for net meter was again increased to 500 kilowatt. Now, the fact of the matter is, number one, right now the power procurement portfolio from rooftop solar distributed RE is in the range of 0.8% to 1%. As per our calculations, you might be a little plus or minus, right? So right now it really doesn't make a difference, right? Really doesn't make a dent in the Discom's balance sheet. But let's say if we are promoting solar, and as you said, there's a potential to be unlocked. Let's say we are moving to 5%, 10%. Globally, we see many countries are in the range of 40 to 60% of their RE potential coming from distributed RE. So that's at least technically possible, right? Will these incentives still be sustainable? 500 kilowatt net metering, will it be sustainable, right? 𝗵𝗃𝗃𝗃, you can quickly respond to that. But more importantly, for long-term sustainable transition and with a consistent pace, that's what is important for the industry. Mr. Murali Krishnan and Mr. Ajay ji, agar aap bhi respond kar sakte hain, can we build a consensus around the fact that since solar prices are going down, right, it can't be just a money-making asset, both for the MSME as well as domestic market? Can there be eventually a consensus built that the incentive needs to be tapered and brought down, keeping in mind कि आपकी जो tariff है उसमें जो energy charges which are billed, a part of that energy charges also help Discom recover fixed costs, right? All the fixed costs are not up front loaded in the fixed charge, right? So if and the adopters of RE are people like you and me, which are middle income and higher income, right? So if we allow that to continue, you are socializing the cost among the poorer consumers. So is there a possibility to engage in dialogue and build that consensus? Or what's the position of the respective sectors on that, please? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, हमारा जो RERC का जो रेगुलेशन है 2021 का डिस्ट्रीब्यूटेड का, उसमें ये एक पॉइंट दिया हुआ है किसी क्लॉज में कि आने वाले टाइम पे ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लगाए जा सकते हैं जो भी नेट मीटरिंग होगी, और वो सही भी है
क्योंकि जब ये हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, आप ग्रिड को ऐसे यूज नहीं कर सकते कि जब चाहे हमने जनरेट किया और जब हमें पावर चाहिए तो हमने ग्रिड से ले लिया, सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं। और मैं खुद ये चाहता हूँ, मतलब कंसेंसस की बात हो रही, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जैसे जैसे रिन्यूएबल्स बढ़ रहा है ना, उसके साथ ही साथ वो समय आ गया है, या अभी से ही हम वो चीज शुरू करें कि हम स्टोरेज को बढ़ावा दें, हाइब्रिड को बढ़ावा दें। हालांकि मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, अभी तक आप अगर राजस्थान का देखें तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे हाइब्रिड सिस्टम लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर लगाना नहीं चाहता है, पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कॉम जो है वो उस चीज को जो मैंने बोला ना, जहाँ पे पीपल की बात है कि वो डाउन द लाइन सभी को वो चीज पता होनी चाहिए कि हाइब्रिड लग रहा है तो उसको उसकी नेट मीटरिंग हो जाएगी और हमें करनी है जो जेईएन है रिमोट एरियाज में। तो वो चीज नहीं है, वो दिक्कत आती है, लोग पूछते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार मैं हाइब्रिड पे नहीं आता, मैं अपना ऑन ग्रिड ही लगवाऊंगा। तो अगर डिस्कॉम इसको बढ़ावा दे कि आप हाइब्रिड पे जाइए तो वो अच्छा है सबके लिए, लोग चाहते हैं हाइब्रिड लगाना। So I would like to add, like, see, Yes, thank you, Anish. That is a very good, you have given us a good insight, and I'll be just taking this all views back. And like we initially, when this energy efficiency projects were started, we did lots of, programs with and the CI also, MSMEs also, and even the residents welfare societies. So I think we should take up something like this. So we should have some meets with the Residents Welfare Society where consumers can gather and these people can take forward, and we'll be providing them with all the good documents related what that questionnaire you are just talking about, that what all things the consumer should know before going in for RTS. But somehow I feel that many in the cities, of course, the consumers are quite well aware, because the number of phone calls I've been receiving, there are some questions which even I cannot answer them immediately, and they are so well aware of it. So many like which panel to buy and this facing and they know about all these things. They are very well read, and because of I think all these Google and everything, they are quite, and especially this consumers own the range of 5 to 10 kilowatt. They are very well read. But yes, of course, we'll be doing our part. We cannot refrain from what Discoms should do. So I'll just take this back all and discuss it with all my seniors, and we are definitely going to come back with something very good initiatives. I assure you of that. Thank you, Deepti ji. We shall be happy to come with you. एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए, क्वेश्चंस तो हो गए एंड यूजर के लिए, वो सही से पूछ लेगा, जान लेगा भाई कितना बिजली बनेगी क्या है, वहां तक ठीक है। लेकिन डिस्कॉम को भले ही वो क्वेश्चंस तो ये सारी जो संस्थाएं हैं वो भी दे देंगी, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट किस तरह का लगा है, वो जनरेट करे नहीं करे वो चलेगा, लेकिन सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान में देने की जरूरत है। डिस्कॉम को ये ज्यादा ध्यान में देना चाहिए, और अपने खासकर जो रिमोट में जो एएन जेएन जो भी चेक करने जाते हैं वो इस चीज का ध्यान दें कि सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वो है रिस्की चीज। मतलब उसको आप हल्के, जब तक सब अच्छा चल रहा है अच्छा है, लेकिन वो है बिजली बनाने वाली चीज और वो रिस्की है, तो उसकी सेफ्टी पैरामीटर्स को, और वो डिस्कॉम ही कर सकता है क्योंकि उनको सब आता है। वो जाके उस पे बिल्कुल भी ओके नहीं करे, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ है तो आपका नेट मीटरिंग नहीं होगा, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, safety is a huge concern, but we are running quite late. We are standing between lunch and the audience, so should draw it to a close soon. But any questions from the audience? Mr. A.K. Gupta, can you pass on the mic? मैं भी हिंदी में बोलूँगा। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ।